Okay, last coupon thile amara 33 na 34 coupon thila re 33 sir. Okay, ठीक अछि 33 coupon thila. Let's start now. Start कर दो. Okay, ठीक अछि. 34 number question देखियो with reference to India, Hindwana and with reference to India, Didwana, Kuchaman, Sargol and Khatu are the names of glaciers, mangrove areas, Ramsar sites, and your saline lakes. These are all the saline lakes. सब जगह राजस्थान रे अच्छे माने दिलवाना लेक महाराजा राणा प्रताप से करते सारगोल भी संबर लेक है. These are all lies in your Rajasthan. Okay, ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए just 1 minute. Next question, 35. Which among the consider the following statements? Number 1 statement the duration of the moon decreases from southern India to northern India. Then the amount of rainfall in the northern plains of India decrease from east to west. Duration of the moon, monsoon decreases from southern India to northern India. बिल्कुल ठीक एकदम. The amount of annual rainfall in the northern plains of India decreases from east to west. एकदम ठीक. या भीतर कीवर्ड कोटा के मत कहि परिबो. ई जे दुईटा स्टेटमेंट रे कीवर्ड कोटा त सब तो ठीक अछि. कीवर्ड ता मेन जोत्र की भूल हेबार बहुत चांस थाए. से कीवर्ड धर देले जी सब ठीक रहबो. कोटा कीवर्ड आ भीतर डिक्रीजेस सर. नंबर 1 रे कोटा southern and northern. नंबर 1 रे जदि मु कहबी स्टेटमेंट रे ड्यूरेशन हो सर. हला ड्यूरेशन पचार चेठी. ड्यूरेशन सब बड़ आ एठी कोन हला दैट इज पर्टिकुलरली अमाउंट. हला मैक्सिमम कोन हुए बहुत फास्ट पिला पढ़ दियंती आ ड्यूरेशन टा को से अमाउंट क्वांटम भाबी दे. हला सो पढ़ला बेले सब बेले मु जेमति कहूची use a pencils to underline so that it could be well noticeable while you read the questions. Particularly confusion level kind of mind से जो pressure था. अच्छा, so answer is your here C. Next देखो 36 number question. এটা भी ভালো question আছে. The winds, consider the following statement. The winds which blow between 30° north and 60° south latitude throughout the year is known as westerlies. Okay, ekdam bhul. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are the part of westerlies. Bilkul ठीक. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are the part of westerlies. Bilkul वेस्टर्ली रे समान पार्ट बिकॉज़ हम कहइतले जेट स्ट्रीम होला माने वेस्टर्ली रे सब पार्ट फोटो. अच्छा, तो एडी आंसर ओनली 2 इज करेक्ट रहबो. तो तुम कहबी दिस इज ओनली 2 इज करेक्ट. सॉरी, तो आंसर 36 रा दैट इज बी फॉर बॉम्बे. हैला बी फॉर बॉम्बे दिस वन. अच्छा, वर्तमान देखियो हम काहे की आकु चूज करली. व्हाई आई चूज सॉरी व्हाई आई चूज ओनली कहीं की स्टेटमेंट 1 को मु रॉन्ग चली की कहि परियो. कहीं की मु स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग कहली. व्हाई इट इज रॉन्ग? यस
सर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ होवा कथा 60 डिग्री साउथ अछि वेरी गुड हैला सेठी कोन लिखिजन से माने सेटा एठी जे जिंसटा हैला 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ होवा कथा एठी केवल खाली एन एस आउ एन माने एठी टिके भूले हिच माने साउथ हैला दिस इज नॉट साउथ होबनी इट इज नॉर्थ होबो तो जेहेतु 30 डिग्री नॉर्थ साउथ होबो ता माने कोन एटा पूरा भूल अरे हमर अर्थ रो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर अछि 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एटी 30 और 60 है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस आर द बोथ आर द नॉर्थ आइतरा नॉर्थ नॉर्थ हबो न साउथ साउथ हबो हां तो एटी मु देखि दउ कोन क्लियर पिक्चर मन रही जो एटी हला तमर 30 डिग्री तो एटी 60 डिग्री है 30 डिग्री 60 एला साउथ साउथ एला नॉर्थ नॉर्थ तो एटी कोन दला 30 डिग्री नॉर्थ रु 60 डिग्री साउथ जोटा कि इम्पॉसिबल एटा ही टोटल रॉन्ग एटा हैला नेक्स्ट सर इटा को मॉक टेस्ट होची 18 सर 18 टा तो पॉलिटी टा सो कर आई थिंक 19 बोले देखिए हां सर 19 था इकोनॉमी एटा 19 बोले है ना ज्योग्राफी एटा ना टेस्ट ठीक है जी सर सर हां कौन तू हां सर 30 19 टा 18 टा पॉलिटी देखौची 19 टा इकोनॉमिक्स अछि हम पिला कैंडिडेट पाखरे जहा मटेरियल अछि सेटा कहूची मते बाउंस हे जाउ जो आपने क्वेश्चन तो सेट नंबर एटी अलगा देखुना डबल मैं अछि देखो जी एटी सेट नंबर सर एटी मॉक 18 टेस्ट दुईटा अछि 18 दुईटा अछि ओटे अछि ज्योग्राफी अछि ओटे पॉलिटिकल अछि देखंतु अछि मॉक टेस्ट अछि शो करूची देखंतु अरे भाई नंबर रे किसी मिलियोनी जे चालू से सुनंतु वर्तमान एटा देखि नियंतु वर्तमान एटा डिस्कशन चलची ओपनली है अपन पास जोटा थिबो पछर करने बे कोन है इट इज ऑल द अबाउट डिस्कस जा भी माइंड काम रखी जिंस बुझन किछ असुविधा नहीं हां सर नंबर रे किसी मिलियोनी जे चालू से हां सर नंबर 35 क्वेश्चन करके कह दियंतु प्लीज हां श्योर 35 टा ना 35 टा Yes, मैडम sir. हां 35 रे एटी कोन हला एटी कीवर्ड हला तमरो एटी ड्यूरेशन आ एटी हला अमाउंट दीटा 35 रो आंसर हला तमरो सी दीटा का करेक्ट एटी कोन लिखा अछि द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया बिल्कुल काहे कि सदर्न इंडिया जेहेतु इक्वेटर पाखरे अछि हला इक्वेटर एटी 0 डिग्री पाखरे एटी हमर 8 डिग्री तो सदर्न इंडिया रे एक्सपोजर ऑफ दिस रेनबोरिंग विंड इज मोर एक्सपोजर माने बेसी समय पे सन एक्सपोजर रहउछन से जो ड्यूरेशन मॉनसून टा डिक्रीजेस कोन हो सदर्न इंडिया रु नॉर्दर्न इंडिया तो एटा बिल्कुल ठीक सदर्न इंडिया बेसी वर्षा पाए मॉनसून विंटर नॉर्दर्न इंडिया टू तब एटी कोन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है एनुअल रेनफॉल नॉर्दर्न प्लेन्स डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू नेकी वेस्ट पॉइंट डिक्रीज करियो ठीक अछि ईस्ट टू नेकी वेस्ट पॉइंट तमर डिक्रीज करी करी जीवो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल है कहीं डिक्रीज करे कहीं ना रेनबोरिंग विंड जेतबे तोर ऊपर को जीवो मॉइस्चर से धीरे धीरे कौन हम तुम मॉइस्चर कंटेंट टा कमी कमी जीवो ईस्ट टू वेस्ट आड़ है सो हेंस बोथ आर करेक्ट Okay, बुझिला sir. 36 नंबर Yes, ऑप्शन sir. 2 टा ठीक सर आउत ठीक अछि 36 नंबर टा 36 नंबर रे कौन दला इठी प्रथम एटा तो भूलना ठीक अछि the moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies westerly part माने particularly हमर जो रहूची ठीक अछि हमर जो एई परसेंट हमर पाउची वर्षाटा कोटा ए जो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी मन जो वर्षा पाउचंती एटी देला हैला कॉज विंटर रेन्स इन द नॉर्थवेस्टर्न रीजन हमें जानी चंती जो वर्षाटा हुए दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यस और नो जानचंती कि नहीं हैला Yes. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और ये यस जो सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जोटा कि तार यस ओके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जोटा अच्छी तार इंसेप्शन ता तार उत्पत्ति ता कोठी नियर द मेडिटेरेनियन सी हैला
वेट एंड सी शीत दिन मोस्टली ये जो रेनफॉल टा हुए तुम विंटर टाइम रे एक्टिव किए थाए जेट स्ट्रीम थाए हैला तो जेट स्ट्रीम जोटा सेटा गोटे पार्ट ऑफ ए वेयर वेस्टर्लीज हैला सेटा को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जोटा हुए एटा तुम जेट स्ट्रीम पे पर्टिकुलरली जोटा कि हुए हमर मेडिटेरेनियन सी कोडी यूरोप पाखरे सेठु तारा जेनेसिस टा हेता पर्टिकुलरली हैला यूरोप पाखरे क्या हां यस हम बुझिन तो यस सर ओके बुझियला ठीक है 37 पर आसंदो with reference to the Indian Ocean dipole sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is correct? Indian Ocean dipole को नहीं IOD phenomena is characterized by यदि मैं कहबी हैला IOD phenomena is characterized by a difference in the sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical East Pacific Ocean. No sir. Rule हबो काहेकि ना इटी हैला जेतु Indian Indian Ocean Ocean. हैला तो इटी Pacific Ocean हबो it is not हैला western Indian Ocean और eastern Indian Ocean हैला western Indian Ocean IOC और ईस्टर्न इंडियन ओशियन ये जो ऑसिलेशन टा हुए एटा यारी भीतर ही हुए तो एटी पैसिफिक केमते आसीओ हम तो लिखु छ एटी आईओडी ना तो हेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग नेक्स्ट an IOD Indian Ocean dipole phenomena can influence El Nino impact on the monsoon absolutely correct Yes sir. है ना so एटी कोन हो only statement 2 is correct B for Bombay है ना बुझियला समझते अरे इंडियन ओशन रो हां वेस्टर्न और ईस्टर्न भीतर ही तमर ऑसिलेशन टा होउचे ए पानी रो एटा तो एटी पैसिफिक कोड पड़े सो हैला तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग नेक्स्ट देखो 38 which among the following pairs of place have most marked difference in total annual rainfalls even through located approximately along the same latitude है ना ये क्वेश्चन एटी की पॉइंट कोटा रहला मार्क्ड डिफरेंस C. है ना मार्क्ड डिफरेंस मेजर सेम लैटिट्यूड जदियो अछंती बट मेजर डिफरेंस बैंगलोर चेन्नई ना बिल्कुल भी नो मुंबई विशाखापट्टनम Ajmer and Shillong hub. अजमेर एंड शिलांग है ना अजमेर कोटी आंसर अब एटा अजमेर Rajasthan. अजमेर इज योर राजस्थान शिलांग इज इन Meghalaya. मेघालय हैला जदि आंकर भितरे एटी देला क्वेश्चन का मार्क मोस्ट मार्क डिफरेंस आ भितरे माने बहुत अधिक है विजिबल मोस्ट मार्क डिफरेंस एमाने भी सेम लैटिट्यूड प्राय सेम लैटिट्यूड रे समस्त किंतु एमानकर मेजर डिफरेंस हैला इनो एटा तो ऊपर तळ होई जे एटा भी भूल किंतु जिंस रहला कोन अजमेर जदि तमे देखु छ एनुअल रेनफॉल जदि पाखा पाखी अजमेर हैला ड्राई एरिया जदि एटी तमरो 40 टू 50 सेंटीमीटर होउची हैला शिलांग रे माने नियर अबाउट पाखा पाखी एमाने कोन 40 टू 50 सेंटीमीटर एनुअल ईयरली हैला इट इज ईयरली जदि देखिबो एठी एई जगह रे इट इज नियर अबाउट 600 माने 500 टू 600 भीतर पड़े सो 550 टू 600 भीतर सेंटीमीटर भीतर ईयरली पड़े सो माने सच एन रिमार्केबल डिफरेंस माने नियर अबाउट 12 टाइम्स or 15 times अधिका रहे इतने अधिका पड़ so it is most noticeable hence answer is C बुझी हला टिकी हेलो सर Yes sir. हां सर yes. टिके एलिनो लानिना डा खाली टिके शॉर्टली कॉल दे थांदे की कोनटा कहले सर एलिनो लानिना एलिनो लालिना भितर एलिनो रो पर्टिकुलर कहबो नॉर्मल साइकिल माने जते बेले हमरो दीटा जिंस थाए एपटे एलिनो रे ठीक अछि एलिनो रे कोन थाए एपटे दीटा रे एपटे थाए नॉर्मल एलिनो रे कोन थाए और लानिनो रे नॉर्मल कोन हुए ओशियनिक करंट रे पेरुवियन कोस्ट रे हाई प्रेशर थाए और एपटे लो प्रेशर थाए हैले एतरे कोन हबो
कि पर्टिकुलर जेतले एलिनो ईयर टा आसे हमर एपटे इंडियन ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइड टा एपटे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साइड टा और एपटे हला पेरू साउथ अमेरिका पेरू चिली दिस इज अ नॉर्मल ईयर साइक्लेशन माने सर्कुलेशन वाटर सर्कुलेशन टा नॉर्मली हमर एपटे रहे ठीक अछि हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम तो एपटे हमर कोन हुए एलिनो ईयर रे हमर एपटे कम वर्षा हुए ठीक अछि एपटे हमर कम वर्षा टा बहुत हुए आउ कम वर्षा हेबा जोगु हमर एटी सुखा पड़े ड्रॉट पड़े हैला बट जेतबे तमरो लानिना ईयर आसे ठीक उल्टाटा हुए ठीक अछि लानिना ईयर रे एपटे कोन होबा हमर लानिना ईयर रे हमर एपटे प्रबल रु प्रबल वर्षा हुए ठीक अछि एपटे साइड टा ठीक अछि हमर इंडिया रे बहुत प्रबल वर्षा हुए और एपटे कम वर्षा हुए ठीक अछि सो दिस इज द मार्क डिफरेंस बिटवीन एल निनो और ला निना भितर जोतरा की मार्किंग डिफरेंस यदि हम देखिबा हमर ईयर ऑफ इंडियन जदि हम देखिबा इंडिया पई भलो की सबुदु ला निना पीरियड टा हैला ला निना इज द वेल ला निना हला हमर वेल माने इंडियन सबकंटिनेंट get good amount of rainfall है एंड कौन भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत भलो रहे एपटे ठीक अछि एग्रीकल्चर हमरो बहुत भलो रहे एपटे ठीक अछि Thank you, sir. okay 39 देखिए which among the following is the correct sequence of the given Indian cities in decreasing order of their normal annual rainfall ये कौन देखिए नॉर्मल एनुअल रेनफॉल में कौन रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर कोची कोलकाता दिल्ली पटना कोलकाता कोची पटना दिल्ली है ना डिक्रीजिंग हाईलाइट कोची डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सी हम कहीं कोची कोलकाता पटना दिल्ली है सब मन देखो दिल्ली रे कम परफॉर्मेंस एटी तमे दीटा माइनस करबो पटना पटना दिल्ली रहला कंफ्यूजन दिल्ली और माने बी और सी भीतर कोलकाता कोची भीतर कोची आगे रहे माने कोची इज केरला सब बेसी वर्षा हुए कोलकाता देन पटना देन दिल्ली सो आंसर इज सी एनी डाउट ओवर दिस वन लेट मी नो No, sir. सर कोची रे अधिक सर केमती हवा कथा है कोलकाता रे हवा कथा नहीं सर कोची रे केमती हो हम कोची रे सर केमती हो कोलकाता रे तो हवा कथा ना सर कोची केमती हो कोची पे केरला रे तो अरे 80 तो मानसून रे 80 बेसी रे 80 बेसी वर्षा हो कोची पे जाएंगे 80 प्रथम 80 एस के माडो हुए एयर इज कोची सर वो जो वेस्टर्न जो सर घाट रो तार ईस्टर्न पार्ट अछि वेस्टर्न पार्ट अछि कोची जेतले हमर इंडिया को प्रथम मानसून एंटर करे प्रथम पर 80 माडो हुए आगे केरला रे तो ऑब्वियसली पूरा आगे 80 हो तापर धीरे धीरे माने आगे क्वेश्चन पढ़ले ना जेतले एपट को पहुंचो तो कम टिके पड़ियो एटा ला अरेबियन ब्रांच रे एटीएस के माडो हुए तापर एटी बे ऑफ बंगाल ब्रांच एपट को जाए तो केरला तो ऑब्वियसली अपन कोटा कहउछंती कोलकाता नहीं कोलकाता ने कोची ठीक अछि किंतु जे मोबाइल नॉर्थ ईस्ट गोटू जदी आसीबो तो कोलकाता आवा कथा बोलू भाव नाउ इट इज क्लियर नाउ ठीक है जी क्लियर है सर यस सर मो समस्त को आई वुड सजेस्ट परीक्षा भी आउरी भी अच्छी टाइम समस्त को ज्योग्राफी रे देखो टिके माने साइंटिफिक सब्जेक्ट रे टिके वाइड रहे माने डायरेक्टली रहने बहुत जिंस इनफॉर्ड वे रे बुझिया हुए आई वुड सजेस्ट बेसी नहीं एनसीईआरटी पढ़ि दियंतु हला प्रथम फंडामेंटल बहुत क्लियर रहबे एनसीईआरटी रे स्कूल लेवल किछि नहीं बहुत छोटा बही बार बार पढ़ले हमर क्लैरिटी बेसी रहबे एग्जाम हॉल रे कोन होय ना टिके माइंड प्रेशर बळे टिके ये रह जाए हालिस माने one type of pressure or hallucinate रहे there is no problem but I would suggest you please follow all these things it would definitely सर रिक्वेस्ट सर आपन रिक्वेस्ट उठे बोलतो सर आपन 5-7 टी क्लास ऑफ फंडामेंटल क्लास ज्योग्राफी रे सर नियंत सर
ଆପଣ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖୁଛୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ 5-7 ଖଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ସବୁ ନହେଲେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ 5ଟି କ୍ଲାସ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି डिस्कशन न करिकी सर क्लास नेले बेटर हो सर ता परे नहीं डिस्कशन इज वेरी इंपोर्टेंट सेमती नहीं डिस्कशन क्वेश्चन जानिबा बहुत जरूरी ठीक है सेटा तो मो दीपक संगे कथा हन किछ असुविधा नहीं बट मु एतिकी सजेस्ट करबी मो करियर भीतर जेतिकी क्वेश्चन डिस्कशन टा को मु सब बळे इंपोर्टेंट इवन इफ माने माने स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया दिल्ली रो नहीं कि टिल कन्याकुमारी पन सब जगह क्वेश्चन टा डिस्कस टा बहुत जरूरी कारण तमे जहा पढी चंती सब आपण माने सेटा को गोटे जगह रे ताको एनालिटिकल हो सो एटा ही एग्जाम ओरिएंटेड मन रखंतु एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन टा सब बेले प्रायोरिटीज हेबा दरकार काहे ना माने ईयर राउंड रो एक्युमुलेशन गोटे जगह रे रहउची तो मु सब बेले सेटा ही प्रिफर करे कि एग्जाम ओरिएंटेड जो डिस्कशन टा सेटा हम सब बेले बेनिफिट रहिला क्लास को तो डेफिनेट श्योरली मु माने कथा कि मु जणेबी बिल्कुल भी है ना जणेबी Yes, sir. We are eagerly waiting for your classes, sir. हां श्योर ठीक है सर सर कौन आगे सर लिटिल बिट प्रॉब्लम हला सर से साउदर्न ओशन इंडेक्स केमती इंपैक्ट पकोच इंडियन मॉनसून को सदन साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स माने को क्वेश्चन टा कहउछन तो ना ए ज्योग्राफी साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इंडियन मॉनसून केम सर इंपैक्ट पकोच एक्चुअली मु कहउछि हमर जो कॉन्फ़िगरेशन अछि इंडियन ओशियन रो जदि हम कहबी कॉन्फ़िगरेशन माने ज्योमेट्रिकल शेप ठीक अछि हमर जो ज्योमेट्रिकल शेप अछि देखो पानी तो गोटी है ना इफ यू गो फॉर द पैसिफिक और इट इज और योर इंडियन ओशियन दीज आर ऑल सेम पानी गोटी कनेक्टेड दीज आर ऑल द पॉलिटिकल बाउंड्रीज दैट हैव बीन कनेक्टेड प्रॉब्लम कोन रहउछि कि पर्टिकुलरली पैसिफिक और इंडियन ओशियन रे कनेक्शन ता बहुत माने माने वेरी चैनलाइज्ड अछि पर्टिकुलरली जदि मोटी पैसिफिक ने भी एपड़ इंडियन ओशियन ने भी तो एटा बहुत चैनलाइज्ड अछि एई जगह रे कोन होछि मैक्सिमम जो साउथ एशियन कंट्रीज अछंती साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैला तो इंडियन ओशियन पैसिफिक रे जो पानी टा आसुछि एपड़ हमर जो चैनलाइज्ड अछि इट इज कम थ्रू द इंडोनेशिया हैला माने आइलैंडिक नेशंस प्लस एपड़ जब पहुंचुछि कोन होछि सदर्न पार्ट टा ऑसिलेशन टा एटा पर्टिकुलरली जो तमरो वार्म करंट अछि वार्म करंट सब बड़ जिंस वार्म करंट सब बड़े प्राय एक्टिव होछि रीजनली प्लीज म्यूट करो सरोज म्यूट करो हां वार्म करंट हमर कोन रोजी सबुठु प्रथम गोटे बड़ जिंस मु नोट रे लिखि दोछि समस्त लिखि नियो नोट रे लिखि दोछि सरोज म्यूट करो सार पढौछनी जति कि मैनर टिके नाही बारंबार ये करछो वार्म करंट इन इंडियन ओशियन प्लीज नोट इट डाउन समस्त लिखि नियो एटा मु लिखि दोछि तो वार्म करंट हैला अंडरलाइन कर दोछि वार्म करंट इन इंडियन ओशियन is commonly is सरोज म्यूट करो सर आपण प्लीज टिके ताको म्यूट कर किछि दियंतु मो और गोटे सेकंड मो वेट कर दोछि सर आपण नोट कर दियंतु समस्त म्यूट टा कोडी अछि सरोज रंगरा दिस वन ना दिस यस सर नाउ इट्स ओके ना ठीक है so the warm current in Indian Ocean is more agile when active agile लिखुछु agile synonyms agile or active then cold current है or we can say the cold current has very less impact very less impact
in oceanic current movement, in oceanic current movement, right, in the Indian Ocean. Second point, right? The first point gala. Second point, right? The Pacific Ocean and the Indian Ocean are well channelized through terrestrial lands, माने पूरे लिखित है South and Southeast Asian countries, terrestrial land masses. This directly accelerates the temperature coefficient of Indian Ocean current movement. Hence, the then hence for continuity, I would last point, I would third point. The configuration माने geometrical shape, the configuration or the geometrical shape माने of the Indian Ocean do play a major role on such. Hence, all these parameters contributes to such. Is it okay? Samastangu lekhinele? Yes, sir. Okay. So second point Second point I daki douchi. The Pacific Ocean and the Indian Ocean are well channelized. The Pacific Ocean and the Indian Oceans are well channelized through terrestrial lands, bracket South and Southeast Asian countries. This directly accelerated the temperature coefficient of Indian Ocean current movement. This directly accelerated the temperature coefficient of the Indian Ocean current movement. Third point पढ़ दे बिकी आउथरे. Yes, sir. Yes, sir. Third point आउथरे देखिने the configuration of the Indian Ocean configuration CONFIGURATN configuration मानने है लको geometrical shape तको कहते हैं ना geometrical shape. The configuration of the Indian Ocean do play a major role on such. माने जहाँ पे है configuration of geometrical shape. ठीक है जी. Hence, all these parameters contribute to such. Is it okay? ठीक है जी. ओके सर. सर हाउ गोटे क्वेश्चन अछि कहै कि कौन हाँ सर. सर हमर इन जनरल जो मु बेसी ब्रॉड पर्सपेक्टिव जाउनी सर हमर जनरल कन्वेक्शनल करंट होउची. हाँ कन्वेक्शनल करंट हेले सोलार इंसुलेशन हेला माने से कन्वेक्शनल करंट है कि एयर मासेस गुडा को ऊपर को पळेबो सिंध ओशियन रे जो होउची हमर वार्म करंट अछि कोल्ड करंट अछि. वार्म करंट और कोल्ड करंट से एरिया पे डिपेंड करे. यदि से पानीटा गरम हे गला से हाई लैटिट्यूड को मूव करिवो कि देखो बहुत फैक्टर तो अछि
ताकि एई फैक्टरटा सर म कहूची देखो वाटर रो सब बेले कौन हुए प्रॉब्लम माने जिनसटा सब बेले मन रखु जेमती सब बेले हाई डेंसिटी एरिया रो लो डेंसिटी एरिया को तमरो फ्लो करे माने सरप्लस रो डेफिसिट एरिया को सब बेले फ्लो करे मन रखियो है ना सब बेले सरफेस रो माने सरप्लस रो डेफिसिट एरिया को फ्लो करियो अच्छा पानी रो कंडीशन कोन है प्रथम है कन्वेक्शनल करंट जोटा होची कन्वेक्शनल करंट कोन होची पानीटा जो जगह रे वार्म होची पानी रो नेचर कोन रहला मते कहले प्रथम सैलिनिटी सर पानी रो नेचर हला पानी धीरे धीरे गरम हुए बट बहुत समय गरम टाको धरि के रखि पाए हला तो एई केसटा कन्वेक्शन माने हला एई केसटा कोठी ट्रॉपिकल एरियाज रे वार्म सी हला वार्म सी रे कोन हुए तमर एटी विंड रो इफेक्ट पड़े माने तमर ईस्टर्लीज कोन करे तमर अपर लेयर रटा को बोही केंती नै जो सपोर्ट हला मन मन मुते देठी मु कहिली अपर सरफेस रो पानी टाको कोन करिवो ईस्टर्ली कोन करे पवन डा ये बोही के एपड़ को नै जो सो एरिया रे कोन हो डेफिसिट क्रिएट हला तो पानी टा कोन हो सेही समय रे हला माने हाई लैटिट्यूड रे आउट पड़े तो जनरली कोन हो मूवमेंट हो हला कोटू एपट एरिया रे सेपट एरिया सबुठु बड़ जिंस मन रखंतु पानी रे जो मूवमेंट रहउची ता पछरे विंड रो रोल सबुठु बड़ अछि विंड ही ठेली 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 नउची whether it is your Gulf Stream whether it is your Kuroshio हला मैक्सिमम जो Gulf Stream और Kuroshio को की नउची ए पवन ही ठेली ठेली नउची वेस्टर्ली ही ठेली ठेली नउची हला अब पवन ही this wind also flow also contributes or means your significant responsible for your salinity distributions from tropical seas areas to the high polar areas. सर से ट्रॉपिकल हाई पोलर एरिया पूर्ण सिंकिंग हो कि पूर्ण तळ को आसीयो कि देखो कोल्ड करंट गोटे हुए कोन ना पर्टिकुलरली कोल्ड करंट हुए गोटे फेनोमेना अछि ऑफ वेलिंग मेथड हैला ऑफ वेलिंग प्रोसेस रे कोन हुए जेमति सपोज मु फर्स्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहली से जगह रे कोन हुए पानीटा जो ऊपर वार्म वाटर टा से पळाए ताको पवन ठेली की नै जाए तो सेही जगह रे कोन हुए जो वॉइड स्पेस टा क्रिएट हुए तळु कोल्ड करंट टा डीपर कोल्ड करंट टा से कोन करे से वॉइड स्पेस को क्रिएट करा पे तळु ऊपर को पळे आसे so this mechanism is applicable to the wherever there is a cold current world whether it is Somali current in Africa whether it is an East Australian current or whether it is your Bengal current in Africa or whether it is your Humboldt current in Peru सब जगह रे mechanism ता तमरा हुए हैला माने वार्म करंट को ठेली की नै गेला से जगह वॉइड क्रिएट हैला वॉइड क्रिएट पई कोन हो तळु डेंस वाटर ता से उठी के पळाइला ऊपर तो दिस mechanism ता तमरा मैक्सिमम तमरा देखावे को केस रे कोल्ड करंट केस रे देखावे हैला माने मोर डेंस वाटर कम्स टू द upper surface of the water in order to gap the void space that has been created due to the wind flow. Because sir, is it okay? Okay sir. Shall I proceed? ठीक है. Next statement देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है. The monsoon rainfall decreases as one goes toward the west and northwest in the Ganga plain. है ना monsoon का it तो बिल्कुल ठीक decreases as one goes towards the west and northwest of the Ganga plain. Then the moisture bearing monsoon winds go higher as one moves in the Ganga plain. है ना बिल्कुल ठीक है moisture bearing monsoon winds go higher as one moves off in the Ganga plain. So in this context किया मित्रों correct both A and R are true. R is correct explanation of A. Both they are true. A is correct. Thank you. A जो जिनसोटा फैक्टर टा होची decrease one goes towards the west and northwest of the Ganga plain. तापर जिनसोटा ना A result. ठीक है जी. So answer is A. R is the correct explanation of A. ठीक है जी.
Yes, sir. सर आर केमते ट्रू होबो मत कहतु बर्तमान एथरक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रे जो वर्षाटा एथरक जो एते जोर रे हेची यार भितर बहुत बड़ वन ऑफ द मेजर रीजन इज कैन मानसून टा ऊपर को जो जाईकी सेठी बहुत जगह सस्टेनिक अछि जस्ट ता पर सेटा तो मिसी जेची या संगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस संगे हला बट मानसून मन कहतु मानसून रेन बियरिंग मानसून विंड टा डायग्राम टा करछ दिस इज गंगा प्लेन है गंगा प्लेन मानसून विंड्स टा कौन हुए ग्रेजुअली एपटू एटा मूव करे है सो इट इज ऑफ कोर्स है गो हायर as you moves in the गंगा प्लेन हायर को जीवो एथे कोन अछि एटा तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट गो हायर जीवो से लोअर तो जीवनी केबे एक तो हिमालय संगे बाजी के माने एपटू आछुछंती है हिमालय संगे बाजी के माने एपटू आछुछंती आउ जेतले जिबे से माने ऊपर को पळेबे हरी ए जिनसटा दे आर इन ए वेरी अपवर्ड मूवमेंट ठीक है मैडम यस सर थैंक यू ओके 41 नंबर क्वेश्चन बड़ क्वेश्चन का अछि कोन एटा देछि रे which of the following statements regarding the laterite soils of India are correct they are generally red in color absolutely correct plus red in color they are rich in nitrogen and potash bilkul bol so deficient in nitrogen nitrogen line they are well developed in Rajasthan and Uttar Pradesh bilkul bhi no tapioca and your cashew nut well grown in the soil bilkul absolutely correct 1 and 4 काजू टा बहुत भलो हुए लैटरेट सॉइल रे जेमति कि हम ओडिसा रे काजू कोडी भलो हुए मु कहिदले जानि परियो ओडिसा रे बरहमपुर ठीक अछि बरहमपुर मु कहूची माने ई नो बरहमपुर रे हुए सबुड नंबर 1 रे ओडिसा रे काजू रे किए ओ डिस्ट्रिक्ट कोरापुट सर केंद्रापड़ा ढेंकानाल समस्त निज निज एरिया रे कहि दोछ ओदे मत लागुची खोर्धा रायगड़ा रायगड़ा सर नंबर गजपति गंजाम नंबर 1 is your नयागढ़ खोर्धा एई बेल्ट है जोड़ा को जल्दी कोरापुट गंजाम किछि मना करनी बिल्कुल भी ठीक किछि नो हुए सब जगह हुए है बट प्रोडक्शन रे नंबर 1 नयागढ़ खोर्धा जो माने खोर्धा नयागढ़ टी खुशी होतो नहीं कि जाओ हम स्टेट रे अच्छे कोणार्क मंदिर बाहर को आइला देखियो बढ़िया बढ़िया काजू मिले नी कोणार्क मंदिर बाहर को आइला यस सर पकड़ खोला सब मिले खोला बड़ काजू मु खाली टेस्ट करिया पे दिने पार्टी कला क्लास अपन टेस्ट करिया पे 50 ग्राम खाइ देलेनी तू केल हो दे हैला बहुत बड़ काजू धोला धोला बड़ काजू ओडा मिले भल लागे काजू रो क्वालिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द योर सॉइल ऊपर में हैला सर पैकेजिंग इंडस्ट्री होते बरहमपुर रे बेसी कोथरे पैकेजिंग माने जो इंडस्ट्री रिलेटेड टू हां पैकेजिंग इंडस्ट्री माने जो पापड़ एगुडा सब होचन तो मैडम काजू रिलेटेड सर काजू हां सेथि भी जीवो बरहमपुर रे एक्चुअली जदि कहिबी सेल्फ हेल्प ग्रुप टा ओडिसा रे जदि सबुटो बेसी कोटी प्रॉफिटेबल बरहमपुर रे गंजाम बरहमपुर गंजाम बरहमपुर गंजाम दीटा खाली माने सेल्फ हेल्प ग्रुप रे माने ए पापड़ ए सब जिंस करी की यान मच बहुत भलो ताले से नेक्स्ट देखियो 42 नंबर क्वेश्चन again assessment listening the percentage of bhalo question hai the percentage of net sown area in the total area of the Andhra Pradesh is less as compared to the West Bengal
The percentage of net sown area in the total area of Andhra Pradesh is less as compared to the West Bengal. Okay. The soil of most of Andhra Pradesh is laterite. The soil of Andhra Pradesh is laterite. बिल्कुल laterite केबे भी नो आंध्र प्रदेश रो सब पार्ट laterite नुह बिल्कुल भी हैला कारण तमरो एपटे जदि हम गैंजेटिक ए प्लेन गुडा देखिबे दिस इज मोस्टली योर डेल्टा कृष्णा और गोदावरी सो एटा भूल है दिस इज करेक्ट बर्तन हैला नेट सोन एरिया माने जोथरे तमरो 400 जमीटा अधिक होगे ठीक अछि आंध्र प्रदेश इज कंपेयर्ड टू द वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक वेस्ट बंगाल बहुत अधिक है so देखियो आंसर इज योर A is true, R is false. 42 is C. ठीक है जी next salinization occurs when the irrigation of water accumulated in the soil evaporates leaving behind salts and minerals. Salinization occurs when the irrigation of water accumulated in the soil evaporates, leaving behind the salt and the minerals. Will be correct. Salinization of what are the effects of salinization on the irrigated land? It greatly increases the crop productions. It makes the soil impermeable. It raises the groundwater level. It fills the air spaces in the bilkul. The answer it makes the soil impermeable. माने जितले एवापोरेशन टा अधिक होई जबो कोन हो लुनिया जिंस गुडा सटी एक्युमुलेट करिवो तो एटा कोन करिवो इम्परमेबल परमेबल माने कोन माने तार छिद्र गुडा को जो स्पोर स्पेसेस जो थिवो हला सॉइल रे सेडा कोन करिवो से क्लोज कर देबो हला पोर स्पेसेस एको लिखि दोछु स्पोर स्पेसेस इन सॉइल आ चेक्ड हे जाय ठीक अछि So, सीलिंग ता सोडियम क्लोराइड ने अन्य किछि थाए खाली सोडियम क्लोराइड नो सोडियम क्लोराइड संगे अलगा भी थिवो मैग्नीशियम भी थिवो फास्फोरस भी पोटेशियम भी सब जगह हला मिनरल्स गुडा करंती हो ठीक अछि हां तमे जदी सोडियम क्लोराइड ए क्वेश्चन ता पछले जदी हां मु जदी जीबी अस्तरंग नियाळी एपड एरिया भी जीबी तो समुद्र पानी जेहेतु अधिक तो सोडियम क्लोराइड अधिक पाइबो ठीक है सर यस Okay. 44 number question लिखिए. Identify the correct order of the process of soil erosion from the following. ठीक है. चला. Question कौन दीजिए? Correct order of the process of soil erosion from the following. चला. Correct order of the process of soil erosion from the following. Splash erosion, seat erosion, rill erosion and gully erosion. Seat, splash, rill, gully, then rill, splash, gully, सब जगह process of the correct order. ये मु बुझू चाहिए कौन स्प्लैश एरोजन कौन हुए कि मत कहि परियो स्प्लैश एरोजन कौन water droplet जेतोले पड़े water droplet when falls on the rock bed it is called your splash erosion हला ठप ठप करके गोटे जिंस पड़तो त देखियो जो कळ देखियो जो हम ढिंकिया कळ जो मारंती जो 12 पंप तेरे पानी ठप ठप पड़ी की जो तळे जो सीमेंट थियो सेतरे दाग हो जाय कि नहीं हुई कि नहीं रे यस सर खाई जाय बड़बड़ यस सर ए जाय दैट इज कॉल्ड योर स्प्लैश गोटे ड्रॉप वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर तेरे को स्प्लैश कोन हला सीट एरोजन कोन सीट एरोजन और रिल एरोजन और गली एरोजन भितरे अंक भितरे को जेटा मन रखि देबे एसआरजी मन रख देबे एसआरजी माने सीट हला अल्प अल्प हल्का हल्का तारा विड्थ बड़ सीट रो जदी एतिकी विड्थ हो x
रिल रो टिके अधिक हबो y और गली माने टिके बड़ हबो दिस इज गली हला दिस इज सिट दिस इज रिल और जेड हला एटा गली हला माने कोन हबो विड्थ ता ग्रेजुअली सिट रू आगे सिट देन रिल देन गली टिके चौड़ाटा विड्थ ता बड़ी 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 जीवो दिस इज विड्थ w w w हला स्प्लैश एरोजन का सब मन रखिए वाटर ड्रॉपलेट टाको इट इज फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट हला ड्रॉप हला वाटर ड्रॉपलेट रो मेन हुए सीटर स्प्लैश एरोजन वर्षा पानी भी पड़े जतबे सेटा भी रॉक सरफेस ऊपर इज इट ओके ठीक अछि बुझियला इटा समझते यस सर 45 number with reference to the soil conservation consider the following practices soil conservation ପାଇଁ के one dala with reference to the soil conservation consider the following practices crop rotation sand your sand fences terracing then your wind breaks Hello. Soil conservation by KK following practices. Consider the appropriate methods of soil conservation. KK crop rotation करिवो ठीक अछि absolutely correct. Hello. Terracing it is soil conservation में main करिवो. Terracing बिल्कुल भी ठीक. Wind breaks hello ठीक. Sand fences जोटा इटा एकदम भूल किछि नुआ सैंड फेंसेस एमती किछि भी नहीं सैंड फेंसेस रे किछि मतलब ही नथला हैला टेरासेस माने सॉइल एरोजन को तमे रखियो हैला सोपान प्रणाली चाषटा को टेरासिंग कहंती क्रॉप रोटेशन माने जमीटा को केतेबे समाने दे डोंट लीव योर ब्लैंक और एम्प्टी टू द योर क्रॉप्स सोबे करिवो समाने विंड ब्रेक्स माने पर्टिकुलरली गच्छ लगी समाने विंड को ब्रेक करिवो पर्टिकुलर विंड ब्रेक्स सर माने साइड रे बड़ बड़ गच्छ लगे कि बिल्कुल बिल्कुल कौन से गोटे फार्म हाउस को देखिए पळेबे देखिबे से माने गच्छ गुडा साइड रे जो जग विंड रे डायरेक्शन थिबो से जे पवन से माने सेपटे रखि थिबे मोस्टली हैला सो बड़ बड़ विंड ब्रेक्स सेपटे कोन हुए जनरली जेंती तमरो सागवान आ ये गच्छ लगेबे तो सेटा कोन हुए जनरली दैट इट acts as an buffer wall to protect the crops particularly कि अटके दिए विंड रो जो स्पीड टाकू से कोन करे ब्रेक कर दिए हैला गच्छ गुडा ये बड़ बड़ गच्छ गुडा विंड रो स्पीड टाकू ब्रेक कर दिए विंड ब्रेक कर दिए इनके से माने सेठी भी था दे सो मोस्ट ऑफ द देखियो जगह रे और माने पर्टिकुलरली विंड ब्रेक्स माने गच्छ गुडा करा जाय एंड दिस पर्टिकुलर ट्रीज आर वेरी टॉल बहुत बड़ बड़ गच्छ very tall so hence 2 is wrong so answer is C next which of the following practice can help in water conservation in agriculture क्या भितर reduce on zero tillage of the land ठीक है जी practice जोटा की help करिवो in the water conservation again it keyword है water conservation in agriculture reduce zero tillage on the land ठीक है जी एकदम बिल्कुल applying gypsum before irrigating the field applying gypsum before irrigating the field allowing crop residue to remain in the field सर टिलेज मतलब टिलेज माने हळ करियो जोटा कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन द ग्राउंड की वाटर कंजर्वेशन का एग्रीकल्चर रे ठीक अछि की कर वाटर कंजर्वेशन जोटा रहियो हैला रिड्यूस ऑन जीरो टिलेज ऑफ द लैंड माने हळटा जितले जितरे कम रहिबो वाटर कंसेप्ट पचार जी की वाटर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जोटा हुए हैला ता भीतर को पैरामीटर गुडा रिस्पांसिबल हैला को प्रैक्टिस गुडा पर्टिकुलरली
zero tillage on the land. ठीक अछि applying माने सिचुएशन गुडा एगुडा सब सिचुएशंस गुडा कहूछ applying gypsum जीरो टिलेज ने हଳ हबनी ना कोन सब नहीं मु एठी कहूछ कि एई जो प्रैक्टिस गुडा ठीक अछि वाटर कंजर्वेशन मेथड टाकू से माने हेल्प करन तागु को भाबंतनी है वाटर कंजर्वेशन जो एग्रीकल्चर रहूची ता रे एगुडा सब हेल्प माने इट इज आर दे आर हेल्पिंग इन दैट केस वाटर कंजर्वेशन ठीक अछि मोस्टली को जगह रे सेमी एरिड रीजन रे एटा को प्राय तो ए जिंसटा को समान प्रायोरिटाइज करन इंडिया मन रखल सेमी एरिड रीजन्स रे ए जिंसटा को समान बेसी प्रैक्टिस करन हैला सो ऑल आर करेक्ट तो जिप्सम पकेले तो सॉइल फर्टिलिटी कमी जीवो जिप्सम रा बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड एटी कोन देइ छै एटी देखो बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड ठीक अछि इरिगेशंस करिवा पूर्वरु जिप्सम टाको अप्लाई करा जाय ना काहे जिप्सम टा बाइंड कर दिए मु सेटा मु से पार्ट को मु बोलने सेपट पर्सपेक्टिव को जाउतनी एटी क्वेश्चन बचरा हिची कि ए को प्रैक्टिस टा वाटर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रे करा जाय जोटा कि मु एटी कहली कोन एग्रीकल्चरली सेमी एरिड रीजन रे इंडिया रे एटा प्राय हेल्प जिंस गोडा हला जिप्सम टा कोन करे जेहेतु तमरो हेल्प करे सॉइल टाको वाटर टाको कंजर्व करिया पे अलग साइड यदि हम देखिबा डेफिनेटली दैट इज ट्रू कि जिप्सम सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर दिए बट अदर साइड यदि देखिबा जिप्सम वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करे सर जिप्सम रे जो सैलिनेशन होछि सेटा प्रिवेंट करछि बोधे कोन कहले जिप्सम रे जो सैलिनेशन होछि सेटा प्रिवेंट करछि हां जिप्सम कोन कहले सैलिनेशन सेटा को प्रिवेंट करछि कि जिप्सम टा तो एक्यूमुलेट जोटा करे तमरो सैलिनेशन प्रोसेस टा को जिप्सम एक्सेलरेट करे दिए हैला बट एट द सेम टाइम जिप्सम काम करे वाटर कंजर्वेशन टा को भी हमरो रखे वो एटी बार बार गोटे जिंस खाली गोटे जिंस एटी हाईलाइट करिया को चेष्टा करछि ई पर्टिकुलरली प्रैक्टिसेस पचाछि हैला की ऊपर कैन हेल्प द कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर वाटर कंजर्वेशन हैला हमें सेपरेट इफेक्ट को जीवानी वी आर नथिंग टू बी एनालिटिकल ऑन दैट पर्सपेक्टिव जोटा कहउछनी बिल्कुल भी ठीक आई डोंट डिनाई दैट वन बट ए प्रैक्टिस गुडा वाटर कंजर्वेशन को समाने हेल्प करंती दिस आर द प्रोसेस दैट यू हैव टू बी रिमेंबर सर जीरो टिलेज रे कह दियन सर जीरो टिलेज मु कहली बा हळ करिवा पूर्वरु जदि आपण हळ करूचंदी जोटा कि वाटर रा कंजर्वेशन रे जोटा अफेक्ट हो से जिंसटा reduced on zero tillage on the land वाटर जो हमें हळ करिवु कंजर्वेशन जो प्रोसेस टाको सेटा कोन करिवो ब्रेक कर दबो वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस टाको टिलेज करलो because water may loss or there may be chances of because of the porous process water may your wastage of water भी ही पारे हैला तो कंजर्वेशन प्रोसेस में ए जिंसटा भी तमरो रहिबो प्लस पर्टिकुलरली गोटे जगह से माने वाटर टा कोन करिवे गोटे जगह बंद करितले गोटे सपोज गोटे लैंड नेले हैला यदि टिलेज कले कोन हो देयर मे बी एन ब्रेक्स और नैरो गलीज दैट मे अलाउ वाटर टू पास थ्रू ए केस रे कोन हो कंजर्वेशन हे परिबो वाटर गोटे जगह सिना तमरो रहिले तळु को सर जांगी तमरो तार परमिएबिलिटी फैक्टर बढ़ी जांगी तळे से एक्युमुलेट हो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो तो वाटर कंजर्व न कर तळे केमती हो अरे आज का डेट रे जो हमर जो कंजर्वेशन वाटर करा होची पानी गोटे जगह रे रखिला परे से ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होची ता पूर्व कोन ग्राउंड वाटर रिचार्ज हे होची की यस और नो यस सर थैंक यू सर हेले ओके नेक्स्ट देखो 47 रे the okay the alpine vegetation in western Himalaya is found the alpine vegetation in the western Himalaya acha mane epote asiyala this is your western Himalaya diagram draw करूची this is your eastern Himalaya जेतले भी एग्जाम रे करूथुवे सब छोट छोट एंती उजर बुझिया पे सब क्वेश्चन में पेंसिल डायग्राम कर दो तो हेल्प एनालिटिकल क्वेश्चंस रे in the alpine vegetation the western Himalaya is found only up to a height of 3000 meter while in the eastern Himalaya
it is found up to a height of 4,000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that Eastern Himalayas are higher than the Western Himalayas. Eastern Himalayas are nearer to the equator and sea coast than the Western Himalaya. Eastern Himalaya get more monsoon rainfall than the Western Himalaya. Eastern Himalaya rocks are more fertile than the Western Himalaya. Alpine vegetation से पचार है अच्छा एटी जदि हमें देखिबा या भीतर मोस्ट प्रोबेबल प्रथम तो एटी कोंदो अल्पाइन वेजिटेशन माने कोन बुझुछंदी सर जोटी वाटर कम थिबो सेठी जो वेजिटेशन अल्पाइन माने कोन सरल वर्गीय अरण्य हां सरल वर्गीय अरण्य नहीं ठीक अछि सर मु पचरछि हाउ यू एक्सप्लेन माने केमती अल्पाइन माने कोन बुझुछंदी हमर इंग्लिश जदि हम कहबा here we are studying as a medium as an English sir conical forest नहीं that is fine conical forest alpine माने हला एटी लेखि नियंतु the vegetation that are high elevation sir हुए yes that are found in higher altitude मन रखो हला अल्टीट्यूड रे माने उच्चतार जो जिगड़ा देखा जानती जो वेजिटेशन जेमती किए पाइन और कोनिकल फॉरेस्ट पाइन सेडर फिर एगुड़ा सब है कोनिकल फॉरेस्ट बेसिकली कहा जाए कोनिकल फॉरेस्ट तो ये कौन कौन पाई दिखा जाए ईस्टर्न हिमालय रे बेसी मीटर्स हाइट स्पेसिफिकेशन है जे तो हाइट रे देखा होचंदी ईस्टर्न हिमालय रे अधिक उच्चा देखा होचंदी ता रीजन कोन हला पर्टिकुलरली they are eastern himalayas they are hela देखो एटा तो भूल एटी जदि मु कहबी मोर monsoon rainfall than the western himalaya एटा भी मु भूल कहबिनी हला एटा मु भूल कहबिनी eastern himalayas are higher than the western himalaya यार कोनसी लिंक ता संगे किछि नाही जदि रहला आंसर एटी मन रखंतु बी और सी भीतर कंफ्यूजन आसी बी और सी भीतर तमरो टैली करछि किंतु आ भीतर मोस्ट एप्रोप्रिएट किए टेक्निकली क्वेश्चन रा आंसर टा मोस्ट एप्रोप्रिएट किए बी फॉर बॉम्बे काहे कि इक्वेटर पाखरे अछि और सी कोस्ट पाखरे अछि जेहेतु इक्वेटर और सी कोस्ट पाखरे अछि दिस फैसिलिटेट्स एन adequate please note it down adequate availability of moisture सबु बेले एटी मॉइस्चर टा अवेलेबिलिटी तांग पाखरे रहूची ईस्टर्न हिमालय रा देन वेस्टर्न हिमालय जेतु इक्वेटर ऑफ हिमालय ए सी कोस्ट पाखरे अछि सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर बी और सी बुझी हला एति की यस सर ओके ठीक है हला बाकी अदर्स कार सुबुनी आउ पार्टी बुझेला रे समस्ते यस सर आउटेड यस सर अच्छा बुझेला सर ठीक है अच्छा आउ थरे मैडम मु कहूची सुनंतु मते कोंदु ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय रे ईस्टर्न हिमालय माने को पट्टा जो पटे तो हमर अछि आसाम वेस्ट बंगाल सिक्किम ए पट्टा हला से पट्टा इक्वेटर आउ सी पाख ना ऊपर जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड कोटा सी पाख सी और इक्वेटर पाखरे कोटा ए पट्टा ईस्टर्न हिमालय माने को पाखटा वेस्ट बंगाल और आसाम सिक्किम पाखटा ए सर न जदी सेटा पाखरे हला तो मॉइस्चर टा अवेलेबल बेसी रहइबो अरे सी पाखरे रहले मॉइस्चर टा बेसी रहइबो नि पाखरे देन सेपटा पके प्लीज म्यूट करो सर म्यूट करियो फोन ये लोड़ी लाणी
कहा को आई थिंक इट इज डिस्टेंट लैंड रे देखो मु गोटे दिन क्लास रे कहूची जेतोळे पचारे अछि ना ऑन रखंतो अदरवाइज पूरा क्लास होल क्लास डिस्टर्ब रहउछ आई माने गोटे झगड़ा लागलेनी कोठी गोटे सर आपण सर म्यूट कर दियंत सर कोठी कहा को म्यूट करबी को नंबर सर सर जरा सर माइक ऑन अछि तापर क्लिक करके ना तो म्यूट कर दियंत सर नॉले सर पूरा क्लास सर डिस्टरबेंस हे जिवो जणको पय नरेंद्र साहू जो लिखा होछि नाउ इट्स ओके सर नरेंद्र साहू दिस वन हां भलो भलो जोगिदा इट द होली बिल्कुल अच्छा चाहिए हां भलो ना अरे नरेंद्र साहू म्यूट करू नाहंती नाउ इट्स ओके मु कर देले this is also part of my job well ठीक है अरे कजिया लागिबार मु बुझी पानी माने माने चंद्रयान 3 पर हम देखु बहुत जगह कजिया होची माने जाई पानी हैं ठीक अछि चले प्रोसीड 47 बुझिएला 48 हां सर ईस्टर्न हिमालय ताले सर स्नोफॉल टा अधिका एल्टीट्यूड होथबो मु कहल ना ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय रे मन रखंतु मु ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय इट मु सेग्रीगेट करली मते कहंतु एई पटोटा हमर ईस्ट वेस्टर्न हिमालय एंती उपरिया अछि हिमालय के बेंड ही के अछि ना हला तो मते कहंतु मु सिंपल एई जगह रे लिखुची जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ईस्टर्न हिमालय एपटे मु लिखुची वेस्ट बंगाल सिक्किम आसाम मते कहंतु एमान को भीतर लैटिट्यूडनली किए इक्वेटर पाखरे अछि ए दिटांग भीतर ए अछि ना बी अछि बी सर बी अछि तो जेहेतु इक्वेटर और सी पाखरे अछि तो सिंपल मॉइस्चर की अधिका पाइबो बी पाइबो ना ए पाइबो बी पाइबो नाउ डाउट इज क्लियर यस सर यस सर ओके 48 देखिबा what is the difference between the antipodes oryx and chiru सर एंटीलोप sorry antelopes I'm sorry हैला antelopes माने कौन किए माने हरिण सर डियर हैला yes हैला oryx and chiru कौन हो what is the difference simple oryx is adapted to hot and arid areas where chiru is adapted to the live in steppes and semi-arid areas of cold high mountains ठीक अछि एटा सिंपल गोटे एनिमल ऊपर माने क्रेचर्स ऊपर oryx जो माने hot arid areas रे देखा जांदी where chirus live in steppes and semi-arid areas of high cold mountains ठीक अछि desert so answer is your 48A .49 which of with reference to India which of the following statement is not correct देखिवा about 1/3 of the area of the country records more than 70 mm of annual rainfall एटी प्रथम अंडरलाइन कर not correct नहीं हला about 1/3 of the area of the country records more than 750 meters of annual rainfall okay the dominant source of irrigation in the country is wells हला इंडिया जदि हम देखिबा dominant source बिल्कुल भी नो alluvial soil is the predominant type of soil in the northern plains of the country correct the mountain areas of the areas account for about 30% of the surface area of the country बिल्कुल एकदम ठीक है near about 1/3 पक्का पक्की हमारा mountainous area mountain hilly areas अच्छा मते कहंतु
It is like 1/3 of the area of the country records more than 750 mm of annual rainfall. 1 mm is equal to कितने centimeter और 1 centimeter कितने mm की कोई करियो 100 centimeter. 10 mm. 1 centimeter 10 mm. Very good. 1 centimeter is equal to 10 mm. ता माने इट मु लिखि परिबी 75 centimeter लिखि परिबी. Yes, sir. ता माने it is correct. मु जानि जे इट प्रॉब्लम है 1/3 area 75 centimeter absolutely correct. है dominant source of India are wells no canals. है ठीक है जी. ट्यूबवेल सर. Yes. ट्यूबवेल टा हाईएस्ट लेवल नको. कोटा ट्यूबवेल. सुबुनि मते ट्यूबवेल सर. ट्यूबवेल Tubewell goes on the it is the dominant source of irrigation. Mane majority of the people are dependent on the canals. है water source of irrigations. पानी को से माने कढ़ी के आनंती major part of dominant source मु कहूची. क्वेश्चन अलग प्रकार देछि डोमिनेंट सोर्स मु पचरछि एठी क्वेश्चन टा हला काहे कि इंडिया रे तीन प्रकार फार्मर्स अछंती. गोटे हला रिच फार्मर्स, गोटे हला मिडिल क्लास मिडिल फार्मर्स आ गोटे हला मार्जिनल फार्मर्स. समस्त को पाखरे कैपिटल और समस्त को पाखरे फाइनेंशियली सेवन एडिक्वेट नोंती दे कैन अफोर्ड टू दोस थिंग्स. है तो मैक्सिमम जगह रे कोन हुए कैनाल्स माने आइदर दे अरेंज द वाटर पॉन्ड रू canals नियंती और pond source of irrigations particularly wells रो रहिबनी. wells जदि सही हिसाब रे दबो को माने बेसी परसेंटेज करूचंती then we can go for that, but majority dominant source जदि हम देखिबा it is your canals, it's not wells. है canals जीवो ponds जीवो जदि वेस्ट बंगाल देखिबो ट्यूबवेल जीवो हला पर्टिकुलरली आउ कोन जाय परिबो कोन हे परिबो इरिगेशन रो କିନ୍ତୁ sir maximum irrigation sir देखो ट्यूबवेल सर रिजर्वायर जीवो. ट्यूबवेल इज करेक्ट मना कोनी ट्यूबवेल करेक्ट ठीक अछि. कैनाल्स ट्यूबवेल्स और कैनाल्स ए दिटा कर इंडिया जीवो. वेल्स माने गोटे कुओ केवल खाली कुओ रु पांटा को नेकी से माने करथुवे. मोस्टली महाराष्ट्र तेलंगाना एपोर्ट देखा हुए है. ट्यूबवेल्स भी करेक्ट, कैनाल्स भी करेक्ट है. वेल्स माने हला कोटा कुओ हमर कुओ सोर जोटा कि तमन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश रे पाइबो मोस्टली. ठीक अछि. सो एटा हला तमरा रॉन्ग. ट्यूबवेल रे वर्तमान केते परसेंट देखौ छी कि सर किंतु वेल और ट्यूबवेल मिसी की 55.9% टोटल इरिगेशन देखो सर बही रो. बिल्कुल ठीक अछि. वेल एंड ट्यूबवेल मिसी की करछन बट एटी खाली दैछ वेल्स बोले हला. वेल्स और ट्यूबवेल्स भीतर फरक नहीं. yes sir यस ठीक सर. अछि. एजुकेटिव बोले वेल्स और ट्यूबवेल्स भीतर फरक अछि हला. सब जगह समस्त ट्यूबवेल अफोर्ड करि परिबेनी. ट्यूबवेल पई इलेक्ट्रिसिटी दरकार होइता पारे. द पर्टिकुलर विलेज इज डिवॉइड फ्रॉम योर इलेक्ट्रिकल ये पई ट्यूबवेल पई हला. ट्यूबवेल सब जगह हे परिबेनी. 50 number question देखियो. With reference to the micro irrigation, which of the following statements are correct? किए अभी तो correct. Fertilizers and nutrient loss can be reduced. Fertilizers and nutrient loss can be reduced. It is the fertilizer and nutrient loss can be reduced. Micro irrigations में कोई नहीं. Fertilizers and nutrient loss can be reduced. It is the only means of irrigation of the dryland farming. बिल्कुल भी no. In some areas of farming, the receding of groundwater level can be checked. बिल्कुल. Answer is 1 and 3. इतने मतलब पचारंतु कहाँ कौन डाउट होची मतलब कौन 50 नंबर क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. थर्ड पॉइंट टा ठीक कोन प्रथमे मते कोन माइक्रो इरिगेशन सोर्स कोटा प्रथम
कौन बुझछन माइक्रो इरिगेशन ये पाइप रे नेकी गछ मूल देबो पानी नहीं कि गछ मूल देबो प्रथम एठी मु करछि ए प्रथमटा डीटा एग्जांपल देले पूरा डाउट क्लियर हो सो मु एठी कहि परिबी माइक्रो इरिगेशन रो प्रथम हैला तमरो ड्रिप इरिगेशन यस और नो बुंदा 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 ठप 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 की पानी पड़थो सेकंड रे स्प्रिंकल इरिगेशन माने पानी जो एमती झरना भलिया एमती छिंचुथो चाहे एमती गोटे ठिया हिथो से चारिडे एमती 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 बुलुथो फटफट हे एपडो 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 एमती बुलुथो चारिया देखि जंदी पंजाब बड़े बहुत जरा फार्मिंग रे वर्तमान हेलानी स्प्रिंगिंग सो वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी मिनिमाइज्ड यस और नो हां यस सर Yes, sir. ओके सो वर्तमान हमर जो ओयूटी अछि ओडिसा रे भी बहुत जगह ड्राई एरिया रे से माने जाएंगे जिंस गुडा करछन ड्रिप इरिगेशन कोन हो माटीटा सबळ ओदा है कि तो ठप ठप पानी पड़थो हैला वाटर रा भी तमरो वेस्टेज कम होबो हैला प्लस सरफेस रन ऑफ भी कम होबो न्यूट्रिएंट भी चेक रहबो एटी दिले कोन होबो फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस एब्सोल्युटली करेक्ट कारण बेसी पानी होबोनी से तो न्यूट्रिएंट इंटैक्ट रहला ठीक अछि ओके next it is the only means of irrigation by dry land only means of irrigation in dry land of farming बिल्कुल भी नहीं है ना এটা ভুল in some areas farming receding of ground water level can be checked absolutely कारण जेहेतु पानी तळु एक्सप्लॉइट बेसी हलानी माने लिफ्ट हलानी एला तो कोन हो ग्राउंड वाटर जो लेवल ता सेटा चेक्ड रहइबो ग्राउंड वाटर ता बेसी डिप्लीट कलानी सपोज ग्राउंड वाटर लेवल ता कम होतला आगु पता नै एबुडा मेथड दले कोन हो ग्राउंड वाटर लेवल ता कमी होनी चेक रहइबो सो हेंस 1 and 3 आर करेक्ट ठीक अछि यस सर यस सर यस सर 51 consider the following pairs program and project ministry program and project ministry drought prone ministry of area program agriculture boleda desert development ministry of environment and forest desert development national watershed ministry of development project eta sabu janga bhul laguchi mate let's check eta none hoba mate I think let's check it 51 department of land resources implemented 3 watershed programs integrated watershed development drought prone area and desert development program these are merged under the comprehensive program named the integrated watershed management program in February 2008 department of land resources is the part of ministry of rural development government of India national watershed development project Rainford area is an initiative program to the ministry of agriculture ministry of program and ministry of environment and forest ठीक अछि सो तीन टाइम को भूल एटी ड्राफ्ट प्रोन डेजर्ट डेवलपमेंट एंड नेशनल वाटरशेड हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो 52 which of the following are these are the advantages of practicing drip irrigation देखा it is drip irrigation ड्रिप इरिगेशन रा एडवांटेज किए advantage or disadvantage of the practicing the drip irrigation reduction in the width reduction in soil salinity reduction in the width drip irrigation ठीक अछि reduction in the soil salinity ना रिडक्शन इन सॉइल इरोजन बिल्कुल ठीक जस्ट हम आउट पूर्व करथिले डिस्कस करथिले हैला विथ टाको रिडक्शन कर दबो विथ हैला एंड सॉइलिनिटी को सेंति किछि इफेक्ट पकेबो कारण जेहेतु बहुत कम मात्रा रे पानी से डप डप पड़े सो सॉइलिनिटी लेवल टाको से एतटा रिड्यूस करि पारि नै हैला डिसॉल्व करि पारि नै से
because of your very scanty amount of rainfall. Scanty amount of water is available to the soil. Reduction in the soil erosion, absolutely correct. So 1 and 3 are correct. What is the doubt? Drip irrigation is a form of irrigation that saves water and fertilizer by allowing the water to drip slowly to the roots. To the roots may different plants. Advantages of practicing drip irrigation are maximum use of available water, maximum crop yield, reduction in weed, reduction in soil erosion, low labor cost, no runoff fertilizers, less evaporation of water, improved seed germinations. 1 and 3 correct. (52, 53). How is the permaculture farming different from your conventional chemical farming? कौन हुए 50 इट हला 53. Permaculture कौन रहेगा? Permaculture farming discourages monocultural practices. It is simple. हमर खाली रीडिंग करी होबो ये पे हला. Discourage monocultural practices, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. अच्छा, ठीक है, this is correct. Second, conventional chemical farming can use conventional method. जोटा कि हमें माने generally इटा use हुए चाषी माने करंती. Conventional रे कौन हुए? सारा use करे NPK fertilizers use हुए. Chemical farming can be used to increase soil salinity, but occurrences of such phenomena is not observed in your permaculture farming. That is absolutely correct. Permaculture. Conventional chemical farming. Next, third, conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in soil regions. It can possible. Practice of mulching is very much important. Practice of mulching is very much important in permaculture farming, but not necessary in the conventional chemical farming. Mulching माने कौन बुच्चरे मते कहले गोटे जिंस. What do you understand by the mulching? straw गुड़ा जमा करके रखे. Straw जमा करके सर कवर करके रखे. soil cover को रखे है मैं गोटे. soil moisture content को ये रखे है. हां. तो तापर कौन हुए? सर moisture content टा बैलेंस रहो. सर माटी ऊपर जरी बिछेगी चाष करवाटा. माटी ऊपर वेरी गुड है. जेमती कि आमे कहिबा कि जो जिया खत होची आमे कोना जदि ओडिया रे कहि वर्तमान देखतो म देखतली कोरापुट रो गोटे जंगल रे से माने जिया खत से माने यूज करछन ताको जो आईएफएस फॉरेस्ट ऑफिसर अछंती and they are earn lakhs of rupees by doing that one. वर्तमान करा होची. And this is highly organic. Organic na inorganic? Organic sir. Organic sir. इतने कौन हुए? हमारा soil plus plus गोबर plus जिया है ना plus चोपा एवढा सब करी कि समाने anaerobic condition रे समाने soil टाको तैयारी कर दो. आमने खत टाको है ना, which is highly fertile and very retentive. और इटा sustainable भी. ठीक है जी. So अब तो जे हमें आंसर देखिबा. So 3 is wrong. बाकी सब जंग ठीक. Permaculture तमर organic farming आसीबो, mulching आसीबो हैला. एटा जो mulching, organic farming, mulching हैला, compost एगुडा सब permaculture आसीबो. ठीक है. Permaculture सबुत्र हे परियो जे सब जंग एटा ठीक अछि. ए जे देला कि permaculture farming is not so easily possible in such region कोठी in semi arid सेटा भूल. काहे सब जगह रे possible. वर्तमान गवर्नमेंट एटा ही बेसी दो. वर्तमान देखियो ओईओटी ओडिसा रा प्राय सब जगह रे जाई कि माने चासी भाई मानन सिखा होची सब हैला. सो permaculture practices वर्तमान जोडा अछि जोडा कि mainly the your green manures, green
ହେଲା NPK ରୁ डिपेंडेंसी को कम माने करा जाउछ हां NPK हमें करि परिबा नानो फर्टिलाइजर्स माने जो वर्तमान बाहर लाणी बट मैक्सिमम गवर्नमेंट एटा को दिया होची बिकॉज़ ऑफ योर लॉन्ग टर्म विजन पे सो हेंस एटा इन करेक्ट एटा है ना 53 इज योर 53 जति मैं कहबी स्टेटमेंट 3 टा रॉन्ग बाकी सब जन करेक्ट सो 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि इज इट ओके 54 देखिबा what are the advantage and advantages of zero tillage in agriculture repeat now the question man or zero tillage sowing wheat sowing wheat is possible without burning the residues of the previous crop sowing wheat without the need for nursery of rice saplings, direct planting of paddy seeds in the wet soil possible. जैसे carbon sequestration in the soil is possible, बिल्कुल भी, है ना? So all are correct. Zero tillage. देखिए तो इतने ठीक है. 54 रे कौन दीजिए? Zero tillage is the process where the crop seed will be sown directly through the drillers है क्रॉप सोना drillers माने करंती है जीरो टिलेज रे डायरेक्टली टिलेज न करी कि क्रॉप डायरेक्टली है क्रॉप सीड will be sown बिछा जाए डायरेक्टली drillers without prior land preparation and thus avoiding disturbing the soil where soil previous crop stubbles are present. Zero tillage and direct seed rice not only enable sowing of wheat without any burning of crop residue, but also save water by doing away with transplanting operations in paddy. Zero tillage is environmentally safe, reducing greenhouse effect by way of carbon sequestration. ठीक है 55 देखिए which in context to India which of the following is are considered to be the practice of eco-friendly agriculture ठीक है मित्रों eco-friendly agriculture crop diversification 55 D for Delhi following are considered to be the practice of eco-friendly agriculture किया मित्रों crop diversification बिल्कुल ठीक crop diversification legume intensification okay tensiometer use vertical farming select the correct answers using the code given below all are correct सर टेंसियोमीटर टा कौन जाने टेंसियोमीटर यूज ठीक लेग्यूम तो हला गोटे सेकंड तो फ्रेंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ओके वर्टिकल फार्मिंग ठीक है देखिए ना बहुत के अर्थात केला बोलते टेंसियोमीटर यूज सर सॉइल रो मॉइस्चर को सर मेजर करे जाए ओके मैडम एग्रीकल्चर ये की water potential in a soil अच्छा ठीक है देखिए देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन refers to the adoption of diverse new crops to the existing cropping pattern okay diverse crop it is actually consisting with the agroclimatic conditions of the area besides the groundwater conditions it helps in moving away from monoculture and water guzzling crops characterizing the agriculture practices in India legume they fix the atmospheric nitrogen intensifications is an eco-friendly agriculture practice tensiometer is a sealed water filled tube with ceramic porous cup and vacuum gas to the cup could be really helpful in providing estimates to the soil moisture माने केवल एटा कोन करा जाय sealed water tube को करा जाय to providing the soil moisture to intact रखिया पे thus helping the water conservation
Vertical farming, the crops are grown indoors. Indoor use under the artification, under the artificial conditions of light and temperature. It uses significantly reduce water and pesticides than the traditional agriculture. Indoor use under the artificial condition of light and temperature. It uses significantly reduce water and pesticides than in the traditional. Vertical farming बर्तमान जब मैं कोई भी बहुत जगह यूज होचे जमते रशिया रे है ना बहुत जगह यूज होचे वर्टिकल फार्मिंग इवन इफ इंडिया रे भी जोटा कि हाई एल्टीट्यूड रे माने घर भीतर भी ऑफ कोर्स देयर इज ए डिफरेंट लाइटनिंग सिस्टम टा ये आ हमें कोन एलईडी बल्ब जलाई करियो देयर इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर लाइटिंग अरेंजमेंट इज देयर जोटा कि मेनली तमर ग्रीन हाउस से वेराइटी से पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज सुटेबल फॉर योर crops particularly. What are the advantages? What are the advantages of fertigation in agriculture? Fertigation in agriculture कौन? है ना? Controlling the alkalinity of irrigation water is possible. Controlling the alkalinity of irrigation water is possible. Correct. Efficient application of rock phosphate and other phosphatic fertilizers is possible. So what are the advantages of fertigation in agriculture? Fertigation. Fertigation माने कौन? कोची आगे पढ़ी दो क्वेश्चन टा. Controlling the alkalinity of irrigation water is possible. Okay. Efficient application of rock phosphate and all the fertilizers is possible. Increased availability of nutrients to the plants is possible. Okay. Reduction in the leaching of chemical nutrients is possible. अच्छा. Leaching माने हमें कौन बुझ्छन? के मत कोई परियो? धोई को जगह एटा लीचिंग टा बेसी देखा जाए के मत कोई माटी रो उर्वरता कमे जोटी बहुत वर्षा होई माटी रो रेनफॉल जोटी लैटरेट सॉइल सर लैटरेट सॉइल देखा जाए लैटरेट सॉइल रे ओके आगे लैटरेट सॉइल मतलब इंडिया रे को जगह अछि जोतरे के फर्टिगेशन नाम कहि परिबो ए सॉरी लीचिंग टा सर एटा हमर मेनली सर वेस्ट चेरापुंजी हमर मेघालय सिटी साइड मेघालय मोडी कहि परिबो कोन चेरापुंजी सर पर्टिकुलर चेरापुंजी सर पर्टिकुलर लीचिंग एट्रिब्यूट बेसी है हां बहुत वर्षा सेठी होय चेरापुंजी हे परिबो माइसिन नाम भी हे परिबो यस हला से पर्टिकुलरली खासी एरिया रे हला खासी हिल से पड़े हला तो फर्टिगेशन एडी पचाले मैडम फर्टिगेशन मानेटा हमें कोन फर्टिगेशन प्रोसेस रे कोन वर्तमान गवर्नमेंट कोन करछि डिसॉल्व्ड पर्टिकुलरली हला ए टेक्निक कोन हुए फर्टिलाइजर गोडा सॉलिड फॉर्म रे न रही कि सेमी सॉलिड फॉर्म रे माने डिसॉल्व फॉर्म रे सामाने माटी को दे हला फर्टिलाइजर yes we can say that one hela fertilizers are supplied to crops in dissolved form जेंते हमें कहउछन कोन नानो फार्मिंग जोटा कहउछ ठीक अछि तो ई केस रे कोन हो एटा कोन हो इट्स एन एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम इथमे कोन हो बोथ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कोन कर हो ताकर बहुत बैलेंस फॉर्म रे हो जोतरे कि वेस्टेज मिनिमाइज हो वाटर भी चेक हो हला बहुत सागरे सरफेस रन अप भी कम हो एंड पर्टिकुलरली यार जो डिसॉल्व जो पर्टिकुलरली द क्रॉपिंग पैटर्न दा बहुत जल्दी इफेक्टिव रहउछ सिस्टम रे हमर देखाला कोटा ए फर्टिगेशन प्रोसेस के हला जोतरे कि कोन रहउछ हमर फर्टिलाइजर टाको डिसॉल्व फॉर्म रे सप्लाई करा होछ क्रॉप्स में ठीक अछि सो यदि हम देखिबो एटी 1 3 4 आर करेक्ट 56 सी ठीक अछि इज इट ओके आज पई थाओ एते की विल मीट अगेन हला सर डाउट थिला यस बोल दो
सर जीरो टिलेज टा केमती कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हिसाब रे काम दोछि सेटा टिके बुझे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस माने हम कोन बुझछोंदी प्रथमे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने हम कोन बुझछोंदी प्रथमे फर्स्ट थिंग Sequestration of carbon I think in soil. Sir, storage of carbon dioxide in different place, like in it can be in ocean or in different place. it can be ocean आप पूर्व क्वेश्चन ला जीवा ठीक अछि कार्बन सिंक सर को क्वेश्चन थिला पूर्वटा हां हां कोन कोथरे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कोन होची सर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गोटे जगह स्टोर करंदी आगे जेमति कि नेचुरल गैस तरीका बाहरुची से जगह रु जो खाली होची जगहटा ताकू नेकी सेठी स्टोर करा हुए नहीं तो हमर जो प्लांट मानकर बाहरुची कार्बन डाइऑक्साइड ताकू मॉडिफाइड फॉर्म में नेकी अलगा जगह रे गोटे ओशन रे स्टोर करा हबो तो सर एटा देखंदो एटी जो जीरो टिलेज हला ठीक अछि ओके वेरी गुड मैडम जीरो टिलेज जदी हला हम एग्रीकल्चर रे आ माने कोन हबो प्रथम होई जो कोन रिडक्शन इन फर्टिलाइजर हबो कि नै यस और नो सर 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 हला एट हुई धरंतु जदी रिडक्शन इन फर्टिलाइजर्स हला ता माने कोन हबो इनपुट ही हमर कम होई होची केमिकल फर्टिलाइजर्स रा इनपुट कम होची रिड्यूस करची केमिकल फर्टिलाइजर्स रे इनपुट कम होची कि नै फर्टिलाइजर्स रे इनपुट रिड्यूस होची एट हुई एबे एबे संग संग मो बुझुची माने आई गेस मैडम जदी हम सॉइल रे एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स कम करिवा डेफिनेटली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर हमें हेल्प पाइबा हबनी ठीक अछि माने बुझियला सर हला तो सिंपल इनपुट टा को हम ही एडी इनपुट रे ही हमें कर दो काहे कि हम डायरेक्ट ड्रिल करी करचोंदी तो सॉइल रे ही बेसी हमर सॉइल हेल्थ रा हमर इंटैक्ट रहला हला तो क्रॉप हेल्थ भी ता संगे रहला सो डेफिनेटली इट विल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस रे हेल्प सिंस योर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और केमिकल इनपुट इज लेस सब तो कार्बन कंटेंट ही थाई ना सब जगह रे फर्टिलाइजर से केमिकल ये रे ओके देन ठीक अछि विल मीट अगेन टुमारो थैंक यू ऑल ऑफ यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू